सो क्या आपकी कभी गान फटी है? अगर नहीं फटी तो ये वीडियो बिल्कुल देख लीजिए आप। जरूर फट जाएगी। हाँ, और आज का टॉपिक है स्कैरी घोस्ट कॉट इन कैमरा के बारे में। ये शायद पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो इसी के चलो। साथ। हे एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंड किक्स। आगे नए वीडियो में नया टॉपिक चलो। वैसे ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी पकड़ लो आप। सो यहाँ पे कुछ घोस्ट स्कैरी वीडियोस दिखाएंगे हम लोग, उस पर रिएक्ट करेंगे हम लोग। सो एक यूट्यूब के वीडियो से लिया है हम लोग ने। हाँ, चलो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, रिएक्शन करते हैं, देखते हैं जेन्युइन है कि नहीं। बिल्कुल, लेट्स डू इट। चलो। The Witching Board. Popular paranormal live streamer Ricky Velasquez and his wife Liz traveled to an allegedly haunted house somewhere out in the middle of nowhere in Mexico. Now, apparently the story of this place is truly dark and disturbing because Ricky will only mention that the house was once home to an extremely large family named Hernandez. Apparently, some tragic and unspeakable event occurred at the Hernandez home, and most of the family, including many women and children, lost their lives. Now, whatever did happen, apparently it was so horrific that many people still leave candles at the house to pay their respects to this day. So after exploring the downstairs, Ricky and Liz head up to the second floor. And that's when they begin to experience something that makes their blood run cold. Ricky is broadcasting their exploration live on YouTube. And as he reads comments from his live stream audience, this happens. ¿Fuiste tú? No, क्रॉस भी लगा हुआ है। Bebé, habla de tú. No sé. Hola. ¿Cómo estás? ¿Fuiste tú? The couple hears very strange sounds from somewhere on the top floor. Banging, moaning, and even what sounds like the voice of a young child. No, mi hermano. So now, in an attempt to make contact with the dead, Ricky and Liz decide to use a Ouija board. वाह, And as you सही है। कीबोर्ड खेल रहे हैं। ऐसे एबेंडन बिल्डिंग में रात को जाके ऊर्जा बोर्ड खेलो। वाह, ग्रेट। सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। चलो। You might have guessed, it did not go well. During the Ouija board session, the couple continues to hear disturbing sounds coming from the house. Then something happens that absolutely scares the shit out of them. ¿Estás aquí con nosotros? Sí, ponete de allí. Ponete. भाई भाग गया। बहुत ज्यादा। While using the Ouija board, Liz asks, "Are you here with us?" To which a terrifying little voice replies, "Yes." Ricky believes that he hears the voice coming from right behind him. So he looks through a clothing rack that is nearby and sees the horrifying, deathly pale face of a woman. The couple has had enough and they just run out of there as fast as they can. Now, keep in mind that all of this was broadcast live on YouTube. So whether it's real or not, it would have been much harder to fake. But whether it is real or fake, the footage is definitely very creepy. But if you want to take a look at the video for yourself, you can watch this entire exploration over on the YouTube channel, Ricky Velasquez.
Out of here. A group of friends are having a great time in Torreon, Mexico when they decide to go on a very popular tourist attraction, the Cristo de la Noa's cable car ride. The cable car provides beautiful scenery of the city as it transports tourists up the mountain and through the streets of Torreon. With such a spectacular bird's eye view of the city, the group of friends can't help but take a video to capture the moment. But what happens on this particular ride is very disturbing. Mándale saludos a Roy que está allá para acá. दिखने लगे अभी Que se siente sola. ¿Sí oyeron? Una niña que se siente sola. No, una niña. What sounds like the voice of a little girl can be heard screaming in terror, and the group has no idea where the voice is coming from. Now, after the video was shared on Facebook, many shocked viewers believe they hear the girl say, quote, "Get me out of here. I feel alone." थोड़ा अलग लग रहा है But unfortunately, I don't speak Spanish. So if you do, please let me know what you think the girl is saying down in the comments. Did the group accidentally capture a paranormal event on camera? You decide. "7 days. Popular Japanese paranormal investigators Tomo and Hiro from the YouTube channel Omagatoki Film are contacted by a... हाँ इन दोनों का वीडियो मैंने पहले भी देखा था और बहुत ज्यादा क्रीपी भी होता है ये दोनों एक्सप्लोर करते होंगे शायद आप लोग जाके इन लोग का भी वीडियो चेक कर सकते हैं बढ़िया बनाता है ये लोग। बहुत ज्यादा बढ़िया बनाते हैं वैसे हम लोग भी जाके चेक कर सकते हैं कि नहीं हाँ, कान बिल्कुल। भर जाएंगे तो इसी बात में एक लाइक एक कमेंट अगर आप लोग भी चाहते हो हम लोग ऐसे वीडियो बनाए तो कमेंट और सब्सक्राइब मार दीजिए। लाइक कम से कम Desperate 50 होना landlord. चाहिए हाँ हाँ और सब्सक्राइब कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम भी ऐसे जरूर ट्राई करेंगे चलिए चलो Of an allegedly haunted apartment. The landlord claims that just over 10 years ago, a family of 3 rented the apartment. One night, the father had an unexplained psychotic break and took the lives of his wife and child inside the apartment. Their bodies were found hidden in the closet. The father went on the run, and he was never found. Since the horrific incident, the owner finds it impossible to get tenants to stay in the apartment for more than a week. He says that within 7 days, all of them abruptly decide to just move out. So the landlord challenges the Omagatoki team to live in the apartment for 1 week to figure out just what it is about the property that causes tenants to refuse to stay. Investigator Tomo accepts the challenge and decides to live in the apartment alone for 7 days. A static camera records Tomo as he sleeps and spends time in the bedroom where the tragedy took place 10 years earlier. チャレンジ1日目、さっきまでね、ヒロ君と वो वाला 一緒にいたんで कवर्ड ね ऑन क्यों है まあ、そんなに感じなかったん मुझे で बस すけ वो ど、や जानना っ है ぱりね、一人ぼっちになっちゃうと嫌な空気はありますよね。周り何もないんで、本当に僕の物件なんで、本当、何かあったら、本当どうしようみたいな感じはあるんですけど、まあね、動画的に、微妙ですけど、まあ7日間何もなく無事に過ごせればいいかなと思うんですけどね。いやどうでしょう。特に、やることがなくて、ちょっと眠くなってきたんで、もう初日はこんな感じでいいと思います。Tomo spends the first 2 nights and nothing really happens. But on the 3rd night, at around midnight, Tomo notices something very odd in the bathroom. いや、なんかさっき見て、हर डे 人が見えないっすね。さっき、めちゃくちゃ見て、それ確認しに来たんですよ。確認何もないんですよ。
子いるように見えないですか？おかしいよ。なんでだなんだろう。 A strange shadow can be seen in the window, but Tomo can't find anything outside that could be casting the unexplained shadow. Then the next night, night number 4, and things get a bit weirder. トイレに行こうと हमेशा रात 12 बजे 思 फिक्स टाइम होता है उन लोग का। हाँ, और ये मुतने भी जाता है 12 बजे। इसका भी फिक्स टाइम होगा शायद। हॉन्टेड हाउस में अकेले रहना 7 दिन के लिए वो गुड। बहुत दम है इसमें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। हाँ, बहुत ज्यादा। मैं तो नहीं रह सकूंगा। 7 दिन छोड़ो, मैं एक दिन भी नहीं रह सकूंगा। दिन में ही नहीं रह सकूंगा। हाँ, चलो देखते हैं क्या होता है। 影みたいなのがあったじゃないですか。で、ないっすよ。 अभी नहीं है। 影みたいなの映ってる気がするんだけどな。おかしいよ。なんだっけ。 The shadow from the night before has now disappeared as mysteriously as it came. But when Tomo goes to bed, he's disturbed several times while trying to sleep, as he keeps getting the eerie feeling that someone is in the room with him, standing near the closet. Cut to nights 5 and 6, and now Tomo starts to complain that he hasn't been able to sleep, as he keeps hearing unexplained footsteps, and even more terrifying, the unexplained mumbling voice of a woman. Now it's day 7. Tomo is exhausted and considers quitting the 7-day challenge and just going home, even though there's only 1 day left. Eventually, he decides that he can tough it out and stays for the 7th and final night. The investigator wakes up the next day refreshed and happy. He says he finally got a great night's sleep in the apartment. お疲れ様です。今、急遽、トモさんに来てもらいました。トモさん、昨日の夜の出来事なんですけど、最終日、本当に何も覚えてないんですけど、特に夢だとか、うなされたとかっていうこともないんですけど、なんかね、一番ぐっすり、この朝まで多分ずっと寝て本当に何も変わったことは何もなかったんですね。た。そうなんですよね。昨日は怖い夢も見てないし、僕もなかったけど、わかりました。 And this is when things get weird. While Tomo is at work, Hiro goes through the footage that was recorded on the final night of the challenge. What he finds leaves him speechless, because something did happen that night. Something that Tomo has no recollection of. Something truly chilling. इसको क्या हो गया? Dude. तेरा लैपटॉप हटा दिया गया? उस पे हुआ। अच्छा। हाँ,
In the video, Tomo seems completely out of it as he grabs the camera and sits in front of the closet. The video footage begins to glitch as Tomo creepily smiles at the camera and then inexplicably seems to just start crying. The footage begins to glitch and loop, repeating over and over as the terrifying face of a woman seems to peer out at the camera from inside the closet. Tomo says he doesn't remember anything about the incident, and until seeing the bizarre footage, he believed that he had slept. उसने बोला था ना वो आराम से सो गया, लेकिन कुछ अलग ही चल रहा था वहाँ पे। उसको पता ही नहीं कि वो खड़ा हो गया। Dude. Soundly throughout the night. So could it be that the investigator captured the spirit of the woman whose life was taken inside the bedroom? The woman whose body was found inside this same closet? Let me know what you think. You can watch this entire 2-part investigation and many more scary videos over on the YouTube channel, Omega Toki Film. Into the Woods. So it's another week and another mysterious video. This time I was emailed about a very old video without a source that's been making the rounds on social media. In the video, a group of friends are camping in the middle of the forest. Late into the night, they start to hear strange sounds coming from the dark woods. Now, in what is probably a terrible decision, they decide to grab their flashlights and go to investigate. What happens next is downright chilling. As they search for the source of the creepy sounds, the group spots what appears to be some kind of creature with glowing eyes hiding in the tree line. Shocked online viewers have pointed out that even with the potato quality old video, you can still see that the strange unidentified creature actually appears to blink before it runs off into the woods, adding just a इसी बात पे सब्सक्राइब और कमेंट कर दो भाई। पोटैटो क्वालिटी के लिए पोटैटो क्वालिटी भाई सही बोला भाई, पोटैटो क्वालिटी है तब भी क्लियर आ गया। फिर भी क्रिएचर दिख रहा है आराम से भाई, बहुत ज्यादा डरावना है। अगर आप लोग भी हम लोग को ऐसे काम करवाना चाहते हो तो कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो। अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स और कमेंट्स कितने? कमेंट्स 10 कमेंट्स। 10 कमेंट्स, और अगर इस वीडियो से हमें 20 सब्सक्राइबर मिल जाए तो हम जाएंगे क्योंकि 200 कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का सब्सक्राइबर। अगर 200 कंप्लीट हो गया इस वीडियो से और 50 लाइक्स और 10 कमेंट्स बस हम लोग भी ऐसे एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारा जगह ऐसा पता है। यहाँ पे है बहुत एक तो हमारे घर के सामने ही है, बहुत ज्यादा हॉन्टेड और क्रीपी है वहाँ पे। जब 6:30 या 7 बज के पार हो जाता है, मतलब अंधेरा हो जाता है, कोई निकलता ही नहीं उस साइड से, कोई जाता ही नहीं। मैं खुद नहीं जाता वहां से, मैं शायद घूम के जाऊंगा ऐसे, लेकिन मैं उस रास्ते से कभी नहीं जाता। वो बहुत ज्यादा शॉर्टकट है तालुन के घर से मेरे घर तक, लेकिन हम लोग कोई नहीं जाता वहां से। बहुत ज्यादा क्रीपी है, बहुत ज्यादा। अभी तक बहुत इंसिडेंट हुआ, सबको कुछ दिखता है वहां पे, बहुत कुछ दिखा है। किसी का बाइक पंक्चर हो जाता है, किसी का बाइक ऐसे पकड़ के खींच के रखता है, ये बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है। अगर हो गया 50 लाइक्स, 20 सब्सक्राइबर एंड 10 कमेंट्स तो हम जाएंगे, हम लोग दोनों एक्सप्लोर करेंगे ऐसे ही। बिल्कुल, चलो कंटिन्यू करते। Tiny bit more credibility to this very odd footage. But without a source, once again, we'll never know the full story on this old video. So is it real or just an elaborate hoax? As always, you decide. So आज का वीडियो यही तक रखते हैं। बहुत ज्यादा लंबा खींच गया वीडियो, और ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है, छोटा वीडियो होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्रीपी होना चाहिए ताकि अच्छा लगे। और अगर हम लोग का रिएक्शन कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आज के वीडियो में 20 सब्सक्राइबर बढ़ गए, 10 कमेंट्स
और कितना 50 लाइक्स। 50 लाइक्स आ गया तो हम भी यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, हमारे घर के पास है, और बहुत सारी जगह है यहाँ बहुत पे। सारी जगह है यहाँ। यहाँ पे इतने सारे जगह है ना, आपको मतलब बोलते बोलते थक जाएंगे बहुत। यहाँ पे आउटसाइड एरिया में, थोड़ा गांव साइड में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे मतलब क्रीपी सीपी हाँ। इंसिडेंट होता है। हम लोग ने बहुत सुना है, मतलब हॉन्टेड इंसिडेंट जब हम लोग छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे जगह में ऐसे होते हैं, हॉन्टेड क्रीपी चीजें होते रहते हैं। सो हम लोग वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेंगे, या फिर रात के 12 बजे, बिल्कुल 12:30 ऐसे बनाएंगे एक सीरीज। हाँ, बस ऐसे सीरीज बनाएंगे, जाके एक्सप्लोर करेंगे। अगर बच के आ गए तो सीरीज आपको मिल जाएगा, ये तो खत्म। सो वही जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइबर कर दीजिए। सिर्फ 20 सब्सक्राइबर करना बाकी है अभी, और 50 लाइक्स और कमेंट कर दीजिए 10 बस खत्म। 10 ही बस। 10 ही आई नो यू विल डू इट। चलो खत्म कर दे। चलो, टिल देन वॉच क्रैंकिक्स। बाय बाय।